Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope and I believe everyone is doing very good, and I'm also doing very good. So if you have watched my previous video, then this video is going to be a kind of extension video of that video, because वो video मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती, मतलब बनाना चाहती थी. That's why in this video I'm going to tell you that how you can search the cabin crew interview vacancies by your own. So I'm gonna teach you that in this video. So if you haven't watched my previous video, then it's okay. After watching this video you can go to that video. आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हो, बट मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में इन दैट वीडियो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट फ्रॉम वेयर you should start. So make sure you watch that video, and if you have already watched that video, then welcome. This video is going to be the second part of that particular video. So let's get start with the video. So जितने भी एयरलाइन कंपनीज़ के नाम मैंने मेंशन किए हैं in my previous video, मेरे पहले वाली वीडियो में, I'm going to give all those companies links in the description box, the official websites links. You can go and check from these links as well directly. But ये links, these links keeps on changing. It's not like कि once any link is prepared then it will be forever. It will be forever, like it's not like that. So it's better that I'm going to teach you as well that how you can search any company's job vacancies by your own, and it's very easy, it's very simple, it's not a rocket science. बहुत ही simple है. You have to just go to the Google and आपको कंपनी के नाम के साथ करियर टाइप करना है. For an example, if you want to search any vacancy for Air India, then you have to type Air India career in a Google page, or any browser. You have to just type any browser, क्या बोलते हैं, whatever you call it. You have to type the company's name with the career. After typing that, whatever page will appear on the very first link, जो भी लिंक सबसे पहले टॉप में होगा, you have to click on that particular link, and that is only the official website of the particular company. And now in that website, because it's a career website, so career means it's not that ओनली आप जिसके लिए जा रहे हो, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो वही डिपार्टमेंट रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एयरलाइन हैज़ सो मेनी डिपार्टमेंट्स. यू हैव टू फाइंड योर डिपार्टमेंट्स, लाइक cabin crew department. If you want to search a job vacancies for a cabin crew, you have to go to the cabin crew section. In some companies it is cabin crew are mentioned as like in-flight service department. So you have to search, you will get it easily. If you want to search vacancies for ground staff, then you have to go to the ground operation, एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस और ग्राउंड ऑपरेशन, इस तरह का कुछ रहेगा. सिमिलरली इफ़ यू आर इंजीनियर, देन यू हैव टू गो टू द इंजीनियर डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, पायलट्स डिपार्टमेंट. द हर एक डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अपडेट्स रहते हैं. सो यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस डिपार्टमेंट. आई एम अज्यूमिंग दैट whoever is watching the video, they are all the cabin crew aspirant. Most of you are cabin crew aspirant and ground staff aspirant. So for you the department is cabin crew, and for ground staff you have to go to the ground operation and airport operation, customer service, ऐसे कुछ लिखा रहता है. So I'm going to tell you again, you have to just type company's name in any browser, mostly Google, Chrome, whatever. company's name के साथ career page. That's it. And for your reference, I have already given all the links in my description box. You can check from that as well. But the problem is here, like not problem, but these links are not permanent. It keeps on changing because airline अपने websites को modify करते रहते हैं. So links are not permanent. It's very dynamic and fluctuated. As of now, these are the current links जहाँ मतलब मैंने वेबसाइट से सर्च करके जो डाला है. But I have taught you that how you can also search by your own, so that आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि कोई वीडियो बनाएगा, कोई अपडेट्स देगा, एंड देन यू विल गो. नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द इंटरव्यूज, दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरव्यू. वन इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू एंड अनदर काइंड ऑफ इंटरव्यू इज़ invitation based interview. So nowadays most of the airlines
prefer invitation based interview. Like non-Indian airlines तो पहले से ही they are in the habit of doing invitation based interview. They never conduct any walk-in interviews. Invitation based may first you have to apply online, and then you have to give some online assessment test. If you pass that test, then only they will invite you through the mail. And in that invitation mail you will get all the informations like interview date, venue, time, dress code, what are the documents you have to carry, everything they are going to mention in that particular mail. But another kind of interview which I was talking about is a walk-in interview, where you do not need to give any online assessment, or neither you have to apply. So walk-in interview is basically like when you go to the website, they will advertise their vacancies, hiring events, and they will mention everything like date, timing, documents, everything, dress code, what you have to wear, everything they will mention. Just you have to go to the venue with all the documents, all the relevant things, with a good preparation, and you have to give the interview. So earlier Indian companies ऐसे ही interviews conduct करवाती थी. जब मैं interviews दी थी, I have give walk-in interview only. But nowadays they are also following the protocol, I mean the idea of invitation based interview, I think, to control the crowd, because in walk-in interview anyone can go, but इनविटेशन बेस में सब कोई नहीं जा सकते हैं. जिनको बस शॉर्टलिस्ट किया गया है इनविटेशन मेल के थ्रू, दे ओनली कैन गो. सो आई थिंक nowadays most of the airlines are doing this process only. So you can check in the website that what kind of interview they are. So if it is an invitation based interview, you have to apply first, and then only you will receive. If you get shortlisted, then only you will get to attend the face to face interview. So yeah, I hope you learned that how you can find the real cabin crew job vacancies by your own, by visiting in the airline's official website. One more thing you can do, that I believe that most of you have social media, mostly Instagram आप लोग use करते ही होंगे. So you can follow the airline company's official Instagram page as well, social media page. Like if you are on Twitter or Instagram, whatever social media you are, especially Instagram, you can follow their official page which is verified by Bluetick. So you can follow कंपनी के, जो एयरलाइन कंपनी के, हर एक एयरलाइन कंपनी के अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स है. So whenever any company updates any vacancies, they updates that vacancies in the social media page as well. So from there also you will get the authentic interview updates. So this is the best way, one of the best way also you can follow. Or else if you are not on any social media, then this authentic way of finding the interview is going through the websites. So yeah. And one more thing I want to tell you, that airline never charge any money. So do not trap into any fraud activities or fraudulent kind of things, because I have been in that situation. I have trapped so many times, like in these kind of fraud things. So based on my own experiences only, I am making this video to spread awareness, so that मैंने जो गलतियाँ की है उसके ऊपर मैं अगर अवेयरनेस स्प्रेड करूँ. सो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑफ कोर्स you are not going to repeat that mistake again. And lastly, always remember one thing, that never pay money or any amount for interview, because airline कभी भी money charge नहीं करते हैं interviews के लिए. Yes, airline may ask for demand draft money for the security purpose, and that is only once you get selected, you receive offer letter from the particular company, and on the first day of joining, आपको ऑफिस में, आपको ट्रेनिंग सेंटर या ऑफिस में वो डिमांड ड्राफ्ट, कैश नहीं, कार्ड नहीं, नो ऑनलाइन लिंक्स, scanner, QR code, nothing. It will be a demand draft which you have to deposit to the company for security purpose, because earlier ऐसा नहीं होता था पहले. But क्या होता है अभी कि especially India में, as I have already mentioned in my previous video, if you have watched, that there are so many teenage girls just after passing 12th and 18-19 के age में they join this job, and by only seeing the glamorous side of this job, and once they get into this job and get into this rigorous training, which is a little bit tough,
आई वोंट से टफ, इट इज़ नॉट टफ फॉर मी, बट अगर आप उस तरह के ड्रीमी ख्याल में रहते हो एंड इफ़ यू थिंक दैट cabin crew is just only to you know do service by applying makeup and traveling here and there, it's just a small part. Cabin crew job role is something else apart from this. It's just a part of this job, it's not the whole job. And most of the youngers यही सोच के आते हैं, and जब वो ट्रेनिंग करते हैं और जब वो एक्चुअली ये जॉब में आते हैं तो दे डू नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वो बीच में ही छोड़ देते हैं. सो इट इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर एयरलाइन कंपनी, बिकॉज cabin crew ट्रेनिंग इज़ नॉट लाइक कुछ भी आप सिखा दो. cabin crew ट्रेनिंग के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होता है. एयरलाइन कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट इन देयर पर्टिकुलर cabin crew, नॉट ओनली फॉर क्रू ट्रेनिंग बट एविएशन में हर एक ट्रेनिंग के कॉस्ट होते हैं, स्पेशली क्रू ट्रेनिंग और कैप्टन पायलट्स ट्रेनिंग एंड cabin crew के ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्रैक्टिकल ड्रिल्स विच यू हैव टू गो थ्रू. सो अगर आप बीच में ही छोड़ दो तो कंपनी ऑलरेडी आपके ऊपर जितना इन्वेस्ट करते हैं, इट इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर कंपनी. सो फॉर सेफर साइड कंपनी ये चार्ज लेते हैं, सो दैट अगर आप बीच में छोड़ दो तो एटलीस्ट कंपनी के पास कुछ एसेट्स, एसेट्स इन द सेंस उनको लॉस ना बियर करना पड़े. सो वो कुछ टाइम के लिए दे टेक दिस डिपॉजिट, एंड वंस यू फिनिश सर्टेन टाइम पीरियड इन द कंपनी लाइक 2-3 years, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, देन दे विल रिटर्न दैट अमाउंट विथ इंटरेस्ट. सो यू विल गेट दैट अमाउंट इफ़ यू सक्सेसफुली do the service in the company for a particular time period according to your contract. You will receive the amount as well. So this is the procedure, authentic procedure. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. अगर सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि पैसे मांग रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट. पैसे इन द सेंस कंपनी इज आस्किंग सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट. सो यू कैन ट्रस्ट दैट वंस यू हैव ऑफर लेटर. ऑफकोर्स आपके पास ऑफर लेटर होगा कंपनी की तरफ से. सो दिस इज द प्रोसीजर. एंड फॉर नॉन इंडियन एयरलाइंस हु हायर्स इन इंडिया लाइक मिडल ईस्ट एयरलाइन, दे डू नॉट टेक एनी डिमांड ड्राफ्ट ऑल्सो. जहाँ तक मुझे पता है, दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग. आप सिलेक्ट होने के बाद आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट इंडियन एयरलाइंस फॉर सिक्योरिटी पर्पज दे टेक सर्टेन अमाउंट फ्रॉम यू एंड दे विल रिटर्न इट बैक टू यू एज वेल वंस you finish a particular timeline in the company. So yeah, this was all for this video which I wanted to share, and I hope this video is informative for you. If you found this video helpful, then please give it a like, and if not, then no worries. But I don't think that आपको इसमें कुछ पसंद नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है. But anyway, it's all your choice. And if you have any questions or doubts in your minds, you can always ask it in the comment section. I will be, I will try my level best to clear your doubts as much as possible. So thank you so much for watching this video, and yeah, all the best for your interviews, and fly high. Bye bye, take care. Thank you so much.